Yes, so welcome to the class. Today in the class we are going to discuss some questions here regarding our chromosomal mutation, है ना? आज हम लोग कुछ questions पढ़ने वाले हैं. It will be on the chromosomal mutation क्योंकि ये वाला part हमने already डिस्कस कर लिया है. द लास्ट टू क्लासेस दैट वी हैव डिस्कस्ड हमने पढ़ा था व्हाट इज म्यूटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोमल म्यूटेशन. और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एज वेल एज व्हाट इन्वर्शन, ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. ओके, कम ऑन, वी विल स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट्स. In this, the first question that it is very basic question, बहुत ही basic question है. What is the question? Which of the following is also known as removal of one or more bases from the nucleotide chain? Yes, very simple है ना. इसमें से किसको हम बोलेंगे कि यहाँ से रिमूव हुआ है, या तो फिर न्यूक्लियोटाइड चेन से एक या एक से ज्यादा बेसिस का रिमूवल हुआ है, बाहर निकलना, रिमूव होना. इज इट अ डिलीशन, इज इट एन इंसर्शन, transition or transversion? If I am talking about removal, remove होना यानी बाहर निकलना. Yes, what do you mean by insertion? Insertion यानी तो अंदर डालना, insert करना, isn't it? Transition या transversion बोल रहे तो we can say movement हो रहा है. But if I want to talk about completely removal, that is nothing but my deletion. So the correct answer इसका हो जाएगा deletion. Deletion में क्या होता है? Part of a chromosome it gets deleted, isn't it? या फिर हम बोल सकते हैं कि जो there will be the part that is broken, that is lost. जहाँ से आपका कट आता है, जहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा, वो पार्ट पूरा लॉस्ट हो जाता है, रिमूव होता है या डिलीट होता है. That is nothing called as a deletion. That's why my correct answer for this question is option number A. Got it? Now moving for the next one. What do you mean by, or what is translocation? Translocation क्या है? We have discussed this also. क्या है translocation? चलो यार, just we will go with the options. Shifting of a part of chromosome to the outside wall of a nucleus. Shifting of a chromosome to another chromosome. या फिर shifting of a part of a chromosome to another chromosome or another homologous chromosome, and the last is shifting of a part of a chromosome to another non-homologous chromosome. So what can you give, what can you see about this answer? Always remember, यदि हम translocation बोल रहे हैं, yes, in this case the chromosome piece is going to be replaced, है ना. shift हो रहा है, shifting is always there. जो ब्रोकन सेगमेंट होता है वो अटैच हो रहा है, कहाँ जाके? इट विल अटैच टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑलवेज रिमेंबर, एंड इन दैट वे इट रिजल्ट्स इन अ न्यू लिंकेज. ओके, सो द ब्रोकन सेगमेंट इज गोइंग टू अटैच टू वेयर? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. सो माय करेक्ट आंसर फॉर दिस इज shifting of a part of chromosome to another homologous chromosome. हमने पढ़ा था ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो सकता है, इट कुड बी नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, है ना. वी आर आल्सो गॉन विद द रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. आप सबने, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू हैव मिस्ड दैट क्लासेस, just you can search there, you will get the 2 classes, or if you want I will add the link of that 2 classes in the description box also, है ना. So this is what is called as a translocation. Yeah. Now moving for the next question, and the next question is, how does deletion occur? Deletion कैसे होता है? So the options are, when a part of chromosome is duplicated, or when a part of chromosome is left out, or when a part of chromosome is lost, and the last is when a part of chromosome is translocated. Again very easy question. Deletion या removal, लॉस्ट हो गया, जस्ट मैंने भी बताया था. तो जब ड्यूप्लीकेट हो रहा है यानी डबल हो रहा है, सो यू कैन नॉट से दैट दिस इज डिलीशन, है ना. व्हेन द क्रोमोसोम इज लेफ्ट आउट, छूट गया. अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट आउट एंड लॉस्ट. If I am saying deleted, that means there is a break in the chromosome. Yeah, part of chromosome
chromosome, and that part or the broken part is lost there, isn't it? So this is not, the left out will not be the answer. Translocated, that means shifting. Shifting is also not the deletion, but yes, when a part of chromosome is lost, that is the correct answer. वही उसका correct answer होगा. Got it? So these were very simple questions. Moving for the next. Yes. Now this is a question that it is again a very interesting question. Come on, we will read the question. An individual is having a paracentric inversion. Inversion कौन सा बताया? Paracentric. Yes, which is denoted by the region FED marked by the arrows in a homozygous condition. In a homozygous condition. ये आपको बताया है. ये देखो, this is a centromere and the inversion is happening here between FED. That's why it is, the centromere is not involved here. सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम इसको पैरासेंट्रिक इन्वर्शन बोलते हैं. ये भी हमने पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरासेंट्रिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन, है ना. पैरासेंट्रिक वेयर द सेंट्रोमियर इज नॉट इंक्लूडेड, सो यहाँ पर नहीं है इंक्लूड. और क्या बोला है? द meiotic consequences of the inversion can be, I am repeating the options, or what are the conclusion or the consequences? Generation of an acentric and dicentric chromosome. Second is the recombinants will have a long deletion or duplication and may be lethal. Then the inversion will suppress the crossing over. And the last is all the gametes will have complete genome and will survive normally. Okay, so अभी question क्या है? Question is, which of the above statement or their combination will explain the meiotic consequence of a given inversion logically? Yes. Now, look, listen students. यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन में A, B, C या फिर A, B या फिर B, C या फिर only D. अभी जो D है, D में बोला है all gametes will have complete genome and will survive normally. इन्हें वो बोल रहा है कि इन्वर्शन होने के बाद में भी यस सारे गैमेट्स क्या हो जाएंगे? दे विल हैव अ कंप्लीट जीनोम और सारे सरवाइव करेंगे नॉर्मली. ठीक है. ए ऑप्शन बता रहा है आपका, ए स्टेटमेंट बता रहा है कि एक एसेंट्रिक और एक डायसेंट्रिक क्रोमोसोम जनरेट होगा. डायसेंट्रिक है ना, जहाँ पर दो सेंट्रोमियर रहेंगे. यस, असेंट्रिक मीन्स वेयर देयर विल बी नो सेंट्रोमियर. जनरली असेंट्रिक क्रोमोसोम इट विल बी लॉस्ट, है ना, यदि वो होता है तो. The recombinants will have long deletion or duplication or may be lethal. यदि पैरासेंट्रिक इन्वर्शन की बात हो रही है तो हमको पता है what is the result of पैरासेंट्रिक इन्वर्शन. पैरासेंट्रिक इन्वर्शन का रिजल्ट हमने देखा था कि there will be an acentric, isn't it? उसके साथ साथ एक डायसेंट्रिक क्रोमोसोम भी होता है. यदि ये बात है तो हम बोलेंगे कि this A could be the correct one. A statement, isn't it? Then the inversion will suppress the crossing over. Crossing over नहीं होने देखा, नहीं, crossing over तो होता है ना. That's why you are getting the acentric and any type of chromosomes, whatever you are getting, it is because of that only. Am I right? So A is right. I can say C is not looking right. So what is B? The recombinants will have long deletion or duplication and it may be lethal. Yes, recombinants जो हो रहा है उसमें डिलीशन या डुप्लीकेशन होता है बिकॉज द इन्वर्शन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द लूप फॉर्मेशन. यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी दैट A and B is going to be the correct, so my option B is going to be the right. But if you are opting this, यदि आप ऑप्शन B को राइट करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. Yes, your answer is wrong there. Why now? You have not read or understood the question. Question क्या है? Come on, I am repeating it again. An individual is having a paracentric inversion in a homozygous condition. The inversion, the first thing that we have seen जब हमने inversion पढ़ा था कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दो कंडीशन में ही इन्वर्शन होते हैं, लेकिन
यदि होमोजाइगस कंडीशन में इन्वर्शन होता है, दैट मीन्स इफ इट हैपेंस एट द सेम पोजीशन. Homozygous means where the both homologous pairs are there, और दोनों homologous pair में एक ही जगह पे इन्वर्शन हो रहा है, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा वहां पर. there will be no developmental problem because the inversion is happening at the same place in both the homologous chromosomes. तो यदि वो इन्वर्ट भी हो रहे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, so there will be no problem. Yes, the problem is going to be there only in a heterozygous condition. So if it is a homozygous condition and if it is a paracentric inversion also, then also everything is going to be normal. So ये abnormal वाली बात ही नहीं आएगी. So what is remaining? That all the gametes will have complete genome and it will survive normally. My correct answer is option number D. Again, इसीलिए मैंने बोला था कि this is a very good question. That's why you have to read the questions very carefully. Got it? Now moving for the next question. The next question is, following is a picture of an inversion heterozygote. Look, yeah, it is written inversion heterozygote. Yes, undergoing a single crossover event. The following statements are given towards explaining the consequences at the end of meiosis. Okay. Now what is the question? The question is which combination of statement is correct. हमको correct combination देखना है. अभी ये options पढ़ने के पहले, ये statements पढ़ने के पहले मैं देख लूँगी कौन से type का inversion है. Heterozygous statement, that is sure. You can see here, ये centromere है. Centromere इसमें involved है कि नहीं है? Can you say that the centromere is involved or not? It is. Yes, because जब crossing over हो रहा है, इस तरह से crossover होगा. Yes, in this way it is coming here. This is the centromere which is also included. So this will be involved there. Am I right? तो paracentric रहेगा कि pericentric रहेगा? If the centromere is involved, then it is a pericentric inversion. अब यदि आपको पता है pericentric inversion हमने पढ़ा था क्लास में भी, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन होगा तो दिमाग में रखना है कि उसका रिजल्ट क्या होता है. यस, अब यदि आपके दिमाग में उसका रिजल्ट पता है, नाउ यू कैन गो फॉर द स्टेटमेंट्स. तो पहला स्टेटमेंट है द रिजल्टेंट 2 क्रोमोसोम्स विल हैव डिलीशन एंड ड्यूप्लिकेशन. यस, वो क्या बोल रहा है कि जो 2 क्रोमोसोम बनेंगे उनको डिलीशन हो सकता है और डुप्लीकेशन भी होगा. यस, द सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट अ डायसेंट्रिक एंड असेंट्रिक क्रोमोसोम इट विल बी फॉर्म. गॉट इट? कौन सा इन्वर्शन है? पेरिसेंट्रिक इन्वर्शन है. डायसेंट्रिक क्रोमोसोम है जिसमें 2 सेंट्रोमियर हो गए. यू कैन सी इफ यू डोंट रिमेम्बर द रिजल्ट, then from the figure also you can get your answer. देखो, यदि मैं इसको क्रॉस ओवर में जा रही हूँ, if I am going with this, the crossover is here. This is the centromere. Yes, 1 centromere, and this will complete here. तो एक सेंट्रोमियर आया है. यदि मैं दूसरा वाला भी देखूँ, if I am moving like this, I will move like this. यहाँ से जाएगा. This 1 centromere is there. Now the crossover is done and it will move like this. 1 centromere in each case. So there is no dicentric or there is no acentric chromosome is going to be formed. So B is not correct. अब B नहीं है correct तो मैं directly ये दोनों ऑप्शन को wrong कर दूंगी. A right है. Yes, because क्या होगा कि deletion या duplication तो होगा. कैसे होगा? I'll show you that also. Now C is the inversion does not allow crossing over to occur. Now inversion is allowing the crossing over to occur. How? By formation of a loop. Loop form हो जाएगा. Yes, जहाँ पर भी inversion हो रहा है वो वाले chromosome and the crossing over is possible. So C statement is also wrong. If C is wrong, I can make it or wrong. So I get my answer that my correct answer is going to be D.
Come on, we will see the other statements also. The crossing over is considered suppressed by inversion as the acentric chromosome will not segregate. यहाँ पर acentric chromosome फॉर्म ही नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट फिर से रॉन्ग ही है ना? The E is all the gametes formed with the crossover chromatids at the end of the meiosis will be non-viable. Crossover chromatids, crossover से जो भी आपके gametes मिलेंगे they will be non-viable. That means उनमें या तो deletion रहेगा या फिर duplication रहेगा, so they are not going to be viable. This is very true. This is true. A is true, E is true, E is true. Now what about F? The gametes having non-crossover, यानी जो parental है, जो crossover में part नहीं ले रहा है, जैसे ये बाहर वाला, this is not taking part in a crossover. यदि जो crossover में part नहीं ले रहा है, they will survive. Yes, definitely they will survive. How? You can see A, B, C, D, E, F, E, G, H, I. It is coming as it is. है ना? अब ये वाला देखो अंदर का A, B. You can see here this one G, F, E, H, G, C. So again it is same. It is I can say यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, yeah, but it is there is no duplication or there is no deletion. So this is what is the result for your pericentric inversion, and that's why my correct answer is option D. I will explain you. जिन्होंने class attend नहीं की थी, you can see from here. ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये आपका इन्वर्टेड क्रोमोसोम है. देखो यहाँ पर इन्वर्शन हुआ है ना? जब ये मियोसिस के प्रोफेज 1 में जाएगा तो वहाँ पे क्रॉसओवर होगा. क्रॉसओवर होते समय में क्योंकि ये यहाँ से इन्वर्टेड है और क्रॉसिंग ओवर के लिए हमको ये बी को बी के साथ में लाना है, सो व्हाट हैपन, यहाँ पर इसका लूप फॉर्म हो जाएगा. ये यहाँ चला जाएगा और डी इधर आ जाएगा. सो देयर विल बी अ लूप फॉर्मेशन. यू कैन सी हियर, है ना? सो द लूप फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. हियर देयर विल बी द क्रॉस ओवर. सो व्हाट इज द रिजल्ट? पहला तो वायबल होगा, जो पेरेंट है जो क्रॉस ओवर में इन्वॉल्व नहीं है, ये वाला. यस, इट इज कमिंग एज इट इज, सो दिस इज वायबल. देखो दूसरा वाला जो है, यहाँ पर आप यहाँ इस क्रॉसिंग ओवर में गया है ए बी, देन इट इज गोइंग डाउन सी डी एंड ए. सो ए बी सी डी ए, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर ई एफ जी एच नहीं है. सो देयर इज अ डिलीशन. एम आई राइट? और ए भी 2 बार आया है तो डुप्लीकेशन भी है, तो ये जो रहेगा ये इनवायबल आएगा. यस, सिमिलरली इफ यू विल सी द थर्ड वन, यदि हम थर्ड देखेंगे तो हम इस तरह से देख सकते हैं उसको. यू कैन सी हियर विच इज टेकिंग पार्ट इन द इन्वर्शन ए बी, यस सी, देन वेर यू विल गो, उसके बाद में क्रॉस ओवर होगा आपका, एंड देन यू कैन गो बी ई एफ जी एच, isn't it? B E F G H. So this will be the result. तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, A है, B है, C D E F G H सारे है. सिर्फ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इन्वर्शन हुआ है. Yeah, so this will be also viable. And the last है, yes, उसमें आप देखोगे, you can see here this one, which is taking part in a crossover again. So which is that? कौन सा है जो क्रॉसओवर में पार्ट ले रहा है? यदि मैं यहाँ से ले लूँ एच जी एफ ई डी सी, देन इट विल कम डाउन क्रॉसओवर बी ई एफ जी एच. यस, दिस इज. तो यहाँ पर क्या है, ये सारे डुप्लीकेट हो रहे हैं ना. एच फिर से आया, एच फिर से आया, लेकिन ए इज नॉट देयर. सो अगेन देयर इज अ डुप्लीकेशन एंड deletion. So the result of the pericentric inversion is what we have seen, that one is going to be viable. Yes, one is normal or viable, another is inverted. Yes, but it will be also viable. So this both are viable, and 2 are going with the duplication and deletion. Duplication and deletion. Yes, so they both will be non-viable.
यहाँ पर कोई भी असेंट्रिक या डायसेंट्रिक क्रोमोसोम फॉर्म नहीं होता है. सो अकॉर्डिंगली जैसे कि मैंने बताया था, माय रिजल्ट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. गॉट इट? So you have to remember all these things. Now moving for the next question. The next question is, inversions are considered as a crossover suppressors because. हम उसको क्यों crossover suppressor बोलते हैं? The reason, first they are saying homozygous inversion are lethal and thus they do not appear in a next generation. How can you say that? Yes, हमने देखा homozygous inversion रहेगा, so everything is going to be the normal there. I had explained you, isn't it? So this is not going to be the right answer. Inversion heterozygote, यदि heterozygote inversion है, so one copy having a normal chromosome and its homologue having inversion does not allow the crossing over. Crossing over is allowed. How? By loop formation. So this is also wrong. The next is, due to inversion present, 4 chromosomes take part in a pairing and crossing over events and make the structure difficult for the separation and gamete formation. अब मुझे बताओ कि पेयरिंग या फिर क्रॉसिंग ओवर जो इवेंट होता है वो 2 क्रोमोसोम के बीच में होता है कि चारों के बीच में होता है? It is between 2 there. Am I right? Not all 4 chromosomes are taking part. So this is also wrong. The last one. The pairing and the crossing over do occur in inversion. Yes, pairing is occurring as well as crossing over is occurring. But the gametes having the crossover products are lethal. जो gametes के बीच में crossing over हो रहा है, they are going to be lethal. Just now हमने देखा duplication होता है, deletion होता है वो दोनों में. दूसरे दो normal है. The other two are viable, the parental one. But where the crossing over is taking place, they are lethal. So my correct answer is option number D. I hope this is also clear. Now moving for one more question, students. Now the question is, the following diagram shows meiotic pairing again in an inversion heterozygote. आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है. That's why I'm underlining the things. And a point where single crossing over has occurred. The resulting gametes produced may be. These are the statements. What is the question? Which of the following combination will be appropriate for the diagram shown? अब फिर से देखो, पैरासेंट्रिक है कि पेरिसेंट्रिक है students? Here is the centromere, and in this case the inversion is happening like this again. Yeah, so it is what? Paracentric or pericentric? What can you see? देखो रिजल्ट यहाँ का देखो, यहाँ से ऐसा गया C D, ये सेंट्रोमियर आ गया, क्रॉस ओवर हुआ, then it is going down in that way. So one centromere is there. Am I right? So it is going to be the pericentric. Yes, where the centromere is involved in the inversion. Clear? Centromere के बाद में ही वो क्रॉस हो रहा है. Am I right? So the chromosome have a normal gene sequence. कुछ क्रोमोसोम में नॉर्मल जीन सीक्वेंस हो सकता है. Yes, हमने देखा था. जो पहला वाला पार्ट नहीं ले रहा है, ये वाला नॉर्मल निकलेगा. So this is right. The chromosome have inverted gene sequence. ये भी true है. Yes, ये अंदर वाला भी जो पार्ट नहीं ले रहा है, यहाँ से भी एक, it will go as a what? Inverted. Just now I have told you in the last question. The dicentric chromosome with the duplication and deletion. Again, यदि वो pericentric inversion है, तो वहाँ पर dicentric chromosome नहीं होता है. वहाँ पर असेंट्रिक क्रोमोसोम भी नहीं होता है. The next statement is an acentric chromosome having duplication. It is not, because this is a case of pericentric inversion. Isn't it? So these two both are wrong. The chromosome having duplication and deletion. क्रोमोसोम के पास duplication और deletion होता है क्या? है क्या? Yes, it is there, isn't it? The way the crossing over is taking place, this both are going to be duplicate and deleted. So this is true. So A, B and E are true. If A, B and E are true, then my option number B is the correct one. Clear?
Come on, moving for one more questions. You can see यार यहाँ पर ये दिया ही है मैंने, इसके अलावा we will go with that. An individual is having an inversion in heterozygous condition. Again, it is a heterozygous condition. The region on normal chromosomes are marked as A, B, C, D, E, F, G, H. While the chromosome having inversion as a region small a, small b, small c, small d, small e and small. The diagram given shows pairing of these two homologous chromosomes during meiosis and the site of a crossing over is indicated. Condition कौन सा है? Heterozygous condition. The following statements are given to describe the inversion and the consequence of crossing over shown in the diagram. Question है, हमको देखना है which combination of the above statement describes the inversion and meiotic consequences correctly. Now beta, the centromere is here and the crossing over is taking place here. Yes, inversion कहाँ पर हुआ? Inversion यहाँ पर हुआ है. देखो A B C D E F G और यहाँ पर बोला है A B E D C. Yes, so centromere कहाँ है? B के बाद में है. Yes, it is after this here. तो B के बाद में है तो जो भी inversion हुआ है वो तो बाद में हुआ है. So here the centromere is not involved. So this is an example of paracentric inversion. Yes, now I told you paracentric inversion है तो वहाँ पे एक acentric product मिलेगा और एक dicentric भी मिलेगा. So the first statement is this is a pericentric inversion. No, this is the paracentric क्योंकि the centromere is not involved. Then this will generate a dicentric and an acentric chromosome following separation of a chromosome after crossing over. This is very true. If this is a paracentric. So A is wrong. I will eliminate this. A is wrong. I can eliminate this. B is correct. So this can be the answer. यहाँ पर B दिया ही नहीं है तो you can eliminate this also. आपको आंसर कहीं पे मिल गया कि यार correct answer is going to be C. Can I say that the correct answer can be C? Yes, isn't it? Come on, उसके पहले हम लोग statement पढ़ते हैं. C वाला बोल रहा है this will generate two monocentric. Monocentric recombinant ये हमने पढ़ा ही नहीं है. Am I right? All the gametes thus formed will have deletion and or duplication and will be non-viable. सारे gametes non-viable होते हैं क्या? नहीं. All are not there. Only those are involved in the crossing over are there. So this is also not true. Isn't it? Now E is 50% of the gametes having recombinant chromatid will be non-viable जहाँ पे recombination हो रहा है and 50% gametes having non-recombinants that means which are parental they will survive. This is very true. The last is this is a paracentric inversion. This is 101% true here. Yes, this is a paracentric inversion. So statement B, E and F are right. So my correct answer is option number C. I hope this is clear. ये समझ में आया? You can see here. ये देखो आप, ये normal chromosome है, ये inverted chromosome है students. ये आपका centromere है और inversion बाहर हो रहा है. So ये एग्जाम्पल है आपका पैरासेंट्रिक का. अब यहाँ पर अगेन इसका इन्वर्टेड का लूप फॉर्म हुआ है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है. यस, आप देख सकते हो ये पहला वाला तो एज इट इज निकलेगा. सो दिस वन इज यस, ये यहाँ पर अटैच्ड है इस तरह से जो क्रॉस ओवर हो रहा ए बी देन विच इज क्रॉस्ड विथ सी डी ए. देखो when A starts, this is a centromere part, yes, and it ends with this. This is also a centromere part. Yeah, you can see like this. So two centromeres are there in one. So this is called as a dicentric. ठीक है. उसी तरह से जब आप दूसरा वाला देखोगे, you will see that there will be no centromere in this way. You can see here, ये यहाँ से गया, यहाँ से आया. सेंट्रोमियर अभी तक एक भी नहीं आया, यहाँ से गया. There is no centromere. So this is the second one where there is no centromere. So this is called as acentric.
और एसेंट्रिक जो रहेगा वो हमेशा लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रोमियर. सो जब सेपरेशन होगा, पुलिंग होगा, कहाँ पे होगा? It happens with the centromere only, na? So when the segregation is there at anaphase 1, what happens? This will break down because of the pulling, na, stretching. या एक जगह से ब्रेक कर लेगा, सपोज यहाँ से ब्रेक कर लिया, तो आपको ये दोनों इस तरह से मिलेंगे. ये तो पूरा लॉस्ट हो गया. So here there is a deletion, you can see, isn't it? Here also there is a deletion, so you can get two deleted products in paracentric, है ना? और जो फोर्थ वाला रहेगा, it will be as it is, but there will be inversion. So one is normal, one is inverted, and two are, I can say, non-viable, which are deleted. Yes, तो ये था आपका पैरासेंट्रिक. तो इसी के बेसिस पे हमने आंसर्स दिए in this case. So that's why my correct answer is option number C. I hope now that what are this paracentric and pericentric, उसका आपको काफ़ी कुछ, जिन्होंने मेरी दोनों क्लासेस पहले की है, उनके तो शायद से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हाउ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, yes, and how you have to solve such questions. Again, if you have not attended that classes, you can search there, or I will add the link also in the description box, and you can go with that link also. Okay, so इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और दूसरी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का ही प्लॉइडीज पढ़ने वाले हैं. सो बी देयर स्टूडेंट्स, आई स्टॉप हियर ओनली. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. होप यू लाइक द क्लास. यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ share it with your friends, like it, and as well as if you have not subscribed the channel, you can subscribe my channel also. Okay, so thank you students, keep learning, all the best for your studies. And this is also a link of my app, which is Arth Academy app. You can download the app also for more study materials and perfect learning for your side, isn't it? So till then, all of you, bye bye, take care, see you soon in the next class. Bye students.